Hello everyone, I am Divanshu and welcome to the second episode of the CS Talks. So in this episode we have invited Abhishek who works as a software engineer at Goldman Sachs, and before this he worked at SAP Labs. So we will discuss with him everything about Goldman Sachs, how you can apply there, what are the different roles where you can apply, how was his interview experience there, what salaries do they offer at different roles. And आप में से बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि हम CS ब्रांच से नहीं हैं, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से नहीं हैं, तो क्या हम किसी अच्छी कंपनीज में प्लेस हो सकते हैं, क्या हमें कंपनीज रेज्यूमे देके ही तो नहीं रिजेक्ट कर देंगी. सो आई वांट टू टेल यू दैट Abhishek is from chemical engineering from BITS Pilani, and ever since passing out from college he has worked in software jobs. So let's talk to him if he faced any problems or struggles due to his branch in this industry. But before we talk to him, please चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ नीचे एक बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दो. जब भी कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी. सो अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. So hello Abhishek and welcome to the Hello Abhishek and welcome to the Code School. Yeah, hi Divanshu. And first of all, thanks for being a part of this. Yeah, it's a privilege for me to be here. So first of all, so we both know each other from around 8-9 years. So and we almost always talk in Punjabi only. So it feels very weird to talk with him in Hindi or English or any other language. But anyways, Yeah. let's get started. Yeah. Yeah. So there are some questions which I want to ask you, and हमारे Telegram group पे भी काफी लोगों ने कुछ questions भेजे हैं which they want to ask you. So we will be discussing all of them. So first of all, how did you get interview call from Goldman Sachs? कोई referral के through आया था या किसी के या HR ने directly contact किया था या LinkedIn के through, मतलब कैसे हुआ था? राइट, तो पहली बात तो मैंने लिंक्डइन पे अपनी जॉब इंटरेस्ट ओपन कर दिया था, राइट, ताकि रिक्रूटर्स मुझे कांटेक्ट कर पाए. एंड आई वाज आल्सो फॉलोइंग अ फेसबुक पेज वेयर सीनियर्स पुट अप सम जॉब्स, राइट, सो व्हेनेवर द जॉब्स आर ओपन दे पुट इट देयर. सो I got a referral in Goldman Sachs from one of my seniors. So he was a Bitsian as well. But at the same time, I was also approached by one of the recruiters via LinkedIn as well, right? So I told the recruiter that I already have a referral process going on. So they just asked me to continue with the referral process. But yeah, I mean, you don't have to worry if you don't have the referral. Goldman Sachs recruiter can ping you on LinkedIn and ask you if you're interested in applying. Yeah, that's why having a LinkedIn profile is very, very important if you're looking for a job, right? Right. I think you made a video earlier for Yeah. a good LinkedIn profile, and I think the viewers should watch that. Yeah, Yeah, it's yeah. a really good video. Yeah, I'll put the link in the description so that viewers can watch this and create Yeah, their LinkedIn profile. yeah. So, and what role did you interview for? So, Goldman Sachs में थोड़ा जो roles हैं, they are different from other companies. Like Amazon में होते हैं SG1, SG2, और यहाँ पे कुछ I think analyst और इस type के roles होते हैं. Right, So, can you explain about that and what are the right. structure? How is the hierarchy? Yeah. तो ये काफी कंफ्यूजिंग रहता है लोगों के लिए कि गोल्डमैन सैक्स में कैसा हायरार्की है, सिंस इट इज अ बिजनेस फर्म, राइट. तो जनरली हर एक फाइनेंशियल फर्म में ऐसे ही रहता है कि इसमें मेजर 4 से 5 रोल्स होते हैं, ठीक है. स्टार्टिंग फ्रॉम एनालिस्ट, देन कम्स द एसोसिएट, देन कम्स द वीपी, एंड देन कम्स द एमडी, राइट, एंड देन कम्स द पार्टनर मैनेजर, राइट. सो so everyone is analyst here, yeah, in Goldman Sachs, or everyone is associate, right? So how do they differentiate between the developers and the business people is they just call business people business analyst and the developers as the technology analyst, right? Okay. So within analyst, you have 2 roles, technology analyst 1 and technology analyst 2. Okay. Then within associate also you have technology associate 1, 2, whatever, right? So yeah, to be honest, I didn't apply for a specific role, although I wanted to be an SG2, because I came from a product-based company earlier. Yeah, but I just interviewed for it, and then they gave me the role as per my experience and my interview skills. Yeah. Okay. And in ये जो roles हैं इनका salary structure कितना रहता है and does that vary for Right. different colleges? Right. So I mean, first of all, Goldman Sachs बहुत strict structure follow नहीं करता है, right? मतलब there are some companies which follow very strict structure, for example, Microsoft, right?
तो उनका लेवल 59-60 का बहुत स्ट्रिक्ट है कि भाई हम इतने से इतना ही देंगे, इससे ज्यादा कम हम नहीं देते, राइट। बट आई थिंक गोल्डमैन सैक्स में मैंने देखा है कि पैकेज वेरी करता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि एनालिस्ट बंदा कितने से कितने टाइम रहता है और एसोसिएट कितने से कितने, राइट, ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि सीनियोरिटी लेवल कैसा रहता है। तो एनालिस्ट से अगर एसोसिएट जाना है, ठीक है, तो मिनिमम मिनिमम 3 to 4 years चाहिए, राइट। एंड इफ यू आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल तो 2.5 years, राइट। तो 2.5 to 4 years में एनालिस्ट एसोसिएट बनता है, राइट। एंड आफ्टर बिकमिंग एन एसोसिएट यू हैव टू वेट एटलीस्ट 4 to 5 years टू बिकम वीपी, right? And then again, maybe 5 to 6 years to become MD, right? So MD is a very huge role, right? MD stands for Managing Director, VP, Vice President. And तो अगर लोगों को लग रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट मतलब तीसरा ही रोल वाइस प्रेसिडेंट है, तो ऐसा नहीं है। मतलब एक टीम में मल्टीपल वीपीज होते हैं, तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वाला वीपी नहीं है जहाँ पे एक वीपी 3 से 4 टीम संभालते हैं। इसमें वीपी यू कैन अंडरस्टैंड लाइक अ टीम लीड, ठीक है। Okay, so VP is like the SD3 of Amazon, हाँ, or राइट, मतलब more टीम than लीड that. बेसिकली। Yeah. या बेसिकली ही और शी विल हैव अ टीम, simple, Okay. right? Okay. Yeah, Hmm. so they will be the team lead. I think in Amazon SG3s are the team lead. Yeah, Hmm. so I mean you would know better. Yeah, Yeah. so yeah, so L6 basically, L6 of Amazon. yeah, okay. And package structure, तो again I said ऐसा कोई strict bracket नहीं है, तो as such कहीं पे लिखा नहीं हुआ है कि क्या bracket है, but just from my experience on from my peers कि एनालिस्ट का पैकेज वेरी करता है 18 to 25, right? 18 to 25, and it also depends upon college, as you said. Hmm. ठीक है, तो if you are an IITian, maybe you will fall in the higher range, right? But if you are coming from a tier 2 or tier 3 college, you may be, close to 18 lakhs, 19 lakhs, or whatever, 20 lakhs maybe, right? Okay, so as a But fresher, 18 to 25 basically इतनी range रहती है. right. So I think मुझे याद है when Goldman Sachs came to campus, ठीक है, they offered around 22 lakhs as a base, Yeah. but that was for strats profile. तो strats profile थोड़ा सा अलग होता है developer profile से। मतलब strat is tech plus business, and generally on campus package high रहता है because they have to compete with other companies. That's it, right? But generally, I have seen people having 2 years of experience and landing with 21 lakhs of package. So ऐसा कुछ नहीं है कि इसका starting 22 है, right? So just from that basis, I am saying कि 18 to 25 vary करता है. Again depends कि you are analyst 1 or analyst 2, है ना? Or while switching, how many competitive offers you have, how much can you negotiate, how was your interview. It all depends upon that, but I think 18 to 25 is the right bracket, yeah, to assume. Yeah. Okay. And like hike के time, appraisal के time normally कितना percent increment हो जाता है? And Like again it depends मतलब कुछ upon your fixed, performance. like कुछ fixed है हाँ, या वो right. depend करता है performance पे? फिक्स नहीं है पहली Okay. बात तो, ठीक है। और मैं एक और कंपोनेंट बता देता हूँ गोल्डमैन सैक्स के पैकेज के बारे में। तो जनरली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में क्या होता है कि तुम्हारा जो बोनस होता है दैट वुड बी अराउंड 10 to 15% ऑफ योर बेस, राइट। बट गोल्डमैन में ऐसा नहीं है। तो गोल्डमैन treats the people well in terms of bonuses, right? So if you're performing well, they give you huge bonuses. So you can get even 20% of your base, you can even get 30% of your base, right? So yeah, or you can get 5% of your base or 10% also, so it depends, right? So from 10 to 25% or 10 to 30% you can assume you can get the bonus. Again depends upon your performance, right? Okay. But if you're not performing well, maybe you will get a very low bonus, right? So it totally depends upon you, right? So I think at the end of the year, people are looking more forward to the bonuses. As I said, it's a huge amount, right? Rather than the hike. But yeah, if we come to the hike, I think again, it depends upon your base and what is your base compared to your teammates, right? Because if you have a higher base compared to your teammates, you'll get less hike just to make the equity, right? Okay. So
but I would say it is around 5 to 10%. Yeah. So this bonus thing was new for me also. Yeah. I wasn't aware of that. Yeah. So So this is a discretion bonus. So just so you know, it's a discretion bonus. So the manager, like, you don't know at the beginning of the year how much will you get. At the end of the year, only you will get to know, and depending upon your performance, you will get it. Yeah, but oh, it can be huge. okay, got it. And let's talk about your interview now at Goldman Sachs. So Right. how was the interview? How many rounds did you have? And what was the difficulty level of those interviews? So can you talk Yeah. about them? Yeah. So I think interviews are, I would rate it as medium high, right? So some rounds are medium, some are even bit high. It totally depends upon the interviewer. Sometimes, I mean, uh, sometimes they ask you the difficult questions just to know how your thinking approach is, right? So um, I had I had 6 rounds of interview. First was the hacker rank. So as soon as recruiter contacts you or you go through the referral process, whatever, right, you'll get a hacker rank link, irrespective you go through the referral or via LinkedIn recruiter, right? Hmm. So you'll get a hacker rank test. There'll be 2 questions there. One will be medium, second will be easy medium. I mean, it could be medium or it could be easy medium, right? So I remember in my time, one was of DP, I think, and other was ad hoc, right? And so yeah, so the ad hoc one was easy. I mean, it was 1 hour test, 2 questions. Ad hoc one was easy. I was able to complete it in maybe 25 minutes, and then I tried to solve the second one in 35 minutes. And yeah, so it was a greedy problem, but I thought it is a DP problem, Hmm. and I think 9 out of 10 test cases passed, right? Okay. So so the score was as per the test cases, as you would have seen on HackerRank. So Hmm. 9 test cases passed for me, one got the TLE, and as soon as I understood it's a greedy problem, I didn't have the time, right? But Hmm. still, And I mean, is there like if you remember, yeah, what is the limit? Like एक क्वेश्चन करने पे सिलेक्शन हो जाता है, अगले राउंड के लिए कॉल आ जाती है right. या कुछ दोनों करने पड़ते हैं या राइट, तो आई थिंक क्या होता है कि रिक्रूटर फीडबैक पास करते हैं, राइट? तो अगर तुम स्कोर्स होते हैं, राइट, तो जो एडहॉक क्वेश्चन होता है वो मे बी कम स्कोर का होता है, लेट्स से, मतलब जैसे अगर टोटल 100 मार्क्स का है तो वो 40 मार्क्स का होता है एडहॉक वाला, और दूसरा वाला 60 मार्क्स का होता है। हम्म तो अगर आपने 60 मार्क्स वाला कर दिया तो आपको कॉल आ ही जाएगा, हम्म राइट? और अगर हमने 40 मार्क्स वाला कर दिया और सेकंड के भी आपने लेट्स से 4 to 5 टेस्ट केसेस भी पास कर दिए तो भी कॉल आ जाएगा आपको, right? तो मोर देन 50% आई थिंक यू कैन assume, right? ओके ओके But try to do both. I mean, हम्म why? Because it helps you in your other subsequent rounds. हम्म So if you are able to do both the questions, I mean, they have a good impression of you, and your other rounds feedback, will get bit easier. like your Yeah. cumulative score will be higher. Right, right. And they also think the candidate is good. तो I think quarter pad में भी उतना वो नहीं करते, grill नहीं करते हैं, right? हम्म जैसे फर्स्ट राउंड में लेट्स से हाफ ही हुआ, मे बी 60% हुआ, तो उनको लगता है कि ये कैंडिडेट मतलब है भी, मतलब अच्छा भी है और नहीं भी है, पता नहीं है, राइट? हम्म हो सकता है क्वार्टर बैट में थोड़ा ज्यादा ग्रिल कर। तो ऐसा होता है कि नेक्स्ट इंटरव्यूअर को स्कोर तुम्हारा पता रहता है तो एक बायस आ ही राइट, जाता है माइंड में कि अच्छा राइट, इसकी अपने को आ जाता है, मतलब राइट, हाँ किसी को कि भी आ जाएगा, आई मीन, राइट, है ना? हम्म तो ठीक है, तो इसके बाद सेकेंड राउंड होता है। सेकेंड राउंड होता है क्वार्टर पैड राउंड, ठीक है? क्वार्टर पैड राउंड में द इंटरव्यूअर विल कॉल यू, राइट? तो टेलीफोनिक राउंड है, ही विल आल्सो बी ऑन द कॉल एंड ही विल आल्सो आस्क यू टू ओपन द लिंक ऑफ द क्वार्टर पैड एंड डू द क्वेश्चंस, ठीक है? हम्म The interview is always on the call. You can ask him for any clarity, or you can ask him for, I mean, for some hints if you want to. I mean, it is not advised to ask for hints, but I mean, if you're stuck, you can ask it, right? it's like And live coding round. a live coding round, or interviewer can see your pad. Basically, whatever you are writing, they can see it, right? So both are logged in on that pad, basically. Okay. ठीक है, तो इसमें भी 2 राउंड होते हैं, इसमें सॉरी इसमें भी 2 क्वेश्चंस होते हैं, और ये भी 1 आवर का राउंड होता है। अगेन इसमें पहला क्वेश्चन जनरली मीडियम रहता है,
अगर इफ यू आर एबल टू डू द फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी मीडियम रहेगा। पहला क्वेश्चन मीडियम रहता है, पहला क्वेश्चन मीडियम रहता है, दूसरा क्वेश्चन अगर आपने वो कर दिया तो दूसरा क्वेश्चन भी मीडियम रहेगा, और अगर आपने पहला क्वेश्चन नहीं किया तो दूसरा क्वेश्चन इजी रहेगा, जस्ट टू नो कि कैंडिडेट इज एबल टू डू द इजी क्वेश्चंस और नॉट, राइट। मतलब अगर मीडियम नहीं हुआ तो मे बी इजी हो पाए, इजी मीडियम हो पाए, और अगर इजी मीडियम नहीं हो रहा तो फिर मतलब आई डोंट थिंक यू विल गेट थ्रू, ठीक है। बट हाँ, यही रहता है। और इसमें क्या होता है कि after this round, recruiter will ask the interviewer on the email, right? So they will ask for the feedback. So they have a score basically. Okay. So they have a score and the interviewer rates you on of that score, right? So yeah, that's it. So ये second round होता है, ठीक है, ये quarter pad का round हो गया. Then they call you for in-person interviews. And second round में if I remember, मेरे टाइम पे एक हैश मैप और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का क्वेश्चन था आई थिंक, और सेकंड क्वेश्चन आई थिंक बाइनरी सर्च का था। ओके, तो हाँ, बट आई मीन यू कैन सी इफ यू हैव डन इंटरव्यू विद, आई मीन यू शुड बी एबल टू डू। इन 2 राउंड्स के बाद दे कॉल यू फॉर इन पर्सन, ठीक है। इन पर्सन आई हैड 4 राउंड्स, but some people have even 3 rounds, some people even can have 5 rounds, right? But generally 4 rounds होते हैं in person. Fifth round HR का होता है, वो HR पूछता है कि what is your expectation and all salary expectation. So I Just think mean our give a high number our viewers don't know कि ये जो इंटरव्यू था ये पैंडेमिक के पहले हुआ था, तो उस टाइम एक्चुअली इन पर्सन इंटरव्यूज होते थे। Right. For my experience, I had in person. तो generally I think in person थोड़ा better रहता है। Everyone knows कि internet problems रह सकती हैं या फिर कई बार समझाने में मुश्किल होता है, but I think मतलब in person better है। तो in person, so all rounds, first of all rounds happened on one day only, on single day only. I mean they didn't keep on calling on other days. एक दिन में ही सारे rounds हो गए थे। But yeah, it was a long day. I think I went around 10 a.m. I came back around 7 p.m. Right. So same as your Amazon story, right? So I think same as your Amazon story. But I think so in Goldman you get free lunch during the interview. तो उसमें Amazon में भी था, Amazon में भी था। अच्छा, Amazon में, हाँ, तो ये सही है। बट वैसे नहीं मिलता है, मतलब वैसे फ्री लंच नहीं मिलता, you have to pay, but just on the interview day you get it for free. Anyways, तो first round था, I waited for 1 hour and I saw many candidates sitting over there discussing भाई ये क्वेश्चन करते हैं ये कि ये Geek for Geeks पे देखा था, ये ऐसे पिवट कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे। तुझसे क्या पूछा राइट। तो आई वुड सजेस्ट मतलब उतना लोड नहीं लेना चाहिए। मतलब आई थिंक एंड मोमेंट्स पे तो हम किसी से बात करके मतलब क्या ही कर लोगे, मतलब उतना कोई फायदा नहीं होता, फालतू में टेंशन बढ़ती है कि अच्छा यार ये पूछ लिया, ये तो मुझे आता नहीं है। राइट, तो एंजाइटी बढ़ता ही है। मतलब हैव सम फेथ इन योरसेल्फ। आई मीन अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मतलब 10 मिनट का डिस्कशन से इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, ना ही आईसीबीसी फाइनलिस्ट बन जाओगे, राइट। तो कोई फायदा नहीं होगा। फर्स्ट राउंड था, फर्स्ट राउंड में अगेन 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन बाइनरी सर्च का था, बट वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था कि वो बाइनरी सर्च का है। बिल्कुल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, मतलब नहीं पता चल रहा था वो बाइनरी सर्च का है, बट समहाउ थोड़ा टाइम लिया, समझा, और मतलब पहले ओफ एन सॉल्यूशन दिया, अगेन वही ओफ एन दिया एंड लॉग एन दिया, तो was not happy. तो I mean this is your hint. If interview is not happy with off n, you have to go to off log n. Where comes off log n? There comes binary search, right? पहले एक नाइव सॉल्यूशन तो बता ही देना चाहिए ना, कि सोचने का भी टाइम मिल जाता है और कुछ ऐसा साइलेंस भी नहीं होता। तुम मैंने एन लॉग एन बताया ना ही, मुझे लगा कि ठीक है इसको ओफ एन ऑप्टिमाइज कर दूंगा। ओफ एन किया तो उसको फिर भी अच्छा नहीं लगा। तो अगेन दैट इज योर बिगेस्ट हिंट कि यू हैव टू मूव टुवर्ड्स बाइनरी सर्च। तो अगेन अगर कुछ लोगों को इशू होता है कैसे पता चले ये बाइनरी सर्च क्या है, तो दिस इज योर बिगेस्ट हिंट, आई मीन जस्ट फ्रॉम योर इंटरव्यू, राइट। तो बाइनरी सर्च का था, वो हो पाया था फिर। एंड सेकंड क्वेश्चन डीएफएस का था, बट ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राफ का क्वेश्चन नहीं था, राइट। तो ऐसे था कि 2D ग्रिड है, राइट, और तुम सेंटर में हो, मतलब सॉर्ट ऑफ सेंटर में हो, और तुम्हें बस ट्रैवर्स करना, राइट। तो इट इज अ ग्राफ प्रॉब्लम बट इन अ 2D ग्रिड बेसिकली, राइट। तो मतलब डीपी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उस टाइम, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, राइट। हाँ,
राइट राइट बट और पैटर्न का क्वेश्चन था बट डीएफएस से हो रहा था, डीएफएस से हो गया था, ठीक है। तो फिर उस बंदे ने बोला कि भाई ये स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकता है अगर तुम सोचो तो। तुमने सोचा, फिर उसने पूछा कि यार बताओ थोड़ा, तो मैंने थोड़ा बहुत बताया। एक्चुअली फॉर्मूला था क्योंकि पैटर्न क्वेश्चन था, तो पैटर्न क्वेश्चन में फॉर्मूलाज भी होते हैं, तो इजी नहीं होता वहीं पे बैठ के, जब तुम नर्वस भी हो, थोड़ा एंजाइटी भी है, पहला ही राउंड है, राइट। इजी नहीं होता फॉर्मूला ढूंढना, राइट। मैंने बताया, बोला 90% सही है, 10% अभी भी कुछ है प्लस सी का, y इज इक्वल टू mx प्लस सी में सी मिसिंग है सॉर्ट ऑफ, बट आई मीन ही वाज हैप्पी। तो आई वाज बिट नर्वस कि यार थोड़ा 10% नहीं बताया तो क्या होगा, बट दे गॉट मी फॉर द सेकंड राउंड। second round again was second round actually tough tha somehow, because I know that guy now who took my interview. He was an ICPC finalist, okay, so yeah, so I mean I don't know but he asked me one puzzle first, right? I think वो पजल काफी इजी है। एक एप्पल ऑरेंजेस वाला पजल है, एक में एप्पल ऑरेंजेस और एक मिक्स जार है, कैसे फिगर आउट करोगे मतलब, राइट। तो आई मीन इफ यू गूगल यू विल फाइंड इट, राइट। तो वो बता दिया था, पजल था। और सेकंड क्वेश्चन में काफी टाइम लग गया और वो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन था। तो मैंने सोचा कैसे होगा, और मतलब मैंने सॉल्यूशन दिया तो उसको वो अच्छा नहीं लगा, एंड देन ही आस्क्ड मी कैन यू ऑप्टिमाइज। then again I tried to optimize, and then he was like, okay, but this is not the solution. So I said, I mean, this is working. I mean, your use cases are working, and if I give my custom use cases, it is working. I mean, you give me any use case where it will not work, right? So, I mean, I just said it because I didn't have any other solution to think of, because it was working, right? So, but he was not happy. I mean, he said, I mean, I look at it maybe after the interview, but this will not work and all, right? So, but it was working, and तो मतलब again it मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें geek for geeks वाला ही आंसर देना, ठीक है। वहां पे जो आ रहा है आंसर, जो सोचना है वो बताओ, क्योंकि एज एन इंटरव्यू अगर मैं भी कभी इंटरव्यू लेता हूँ, मैं थिंकिंग अप्रोच देखता हूँ, राइट। मतलब ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक ही सॉल्यूशन होगा एक ही प्रॉब्लम का, तो थिंकिंग अप्रोच पे फोकस करो, क्योंकि उसको वही देखना है, राइट। और वही होता है इन प्रैक्टिकल। रटा हुआ सॉल्यूशन तो कोई भी बता देगा, राइट मतलब राइट। तो आई थिंक मतलब वो डिस्कशन इतना ज्यादा खिंच गया इन द एंड कि ही समहाउ गॉट अ बिट कन्विंस कि या मतलब दिस इज वर्किंग, बट ही वाजंट श्योर, राइट। बिकॉज उसको भी ये सॉल्यूशन उसने भी नहीं देखा था, राइट। मतलब उसको तो गीक फॉर गीक्स वाला पता होता है, हर इंटरव्यू को गीक्स फॉर गीक्स वाला सॉल्यूशन पता होता है, राइट। मतलब हमेशा, राइट। तो उसने बोला कि ठीक है, मतलब आई विल लुक एट इट, if it is okay then we'll call you, otherwise. So towards the end he got a bit convinced that this might be the working solution, and since it was past 1 hour, so he asked me to wait. I was sure maybe I won't get through, right? I mean, because I mean I didn't have a very good time, because he was not convinced with the solution, but somehow I was given one more chance. तो हाँ, तो I was able to go through. अगेन सेकेंड राउंड में वो क्वेश्चन इतना खिंच गया कि मेरा 1 hour फिनिश हो चुका था जनरली, और एक पजल था। मतलब जनरली 2 क्वेश्चंस पूछे जाते, तो ठीक है। तो सेकेंड राउंड के बाद थर्ड राउंड हुआ। थर्ड राउंड में भी अगेन 2 इंटरव्यूअर्स थे, एंड वन पर्सन वाज वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड। आई मीन ही लुक्ड वेरी एक्सपीरियंस्ड। आई थिंक ही हैज अराउंड 20 years of experience. तो I mean, I knew it would be a design round then, and I thought maybe this will be the last round as well then. I mean, right. So yeah, again, to be honest, I didn't have a very good experience with design rounds. I mean, I applied for Amazon SD2, and at the time I didn't know from where to read the designs, and I got rejected. Unlike Divanshu. So yeah, but yeah, after getting rejected, I learned from where can we read the system design, all the resources, and then I prepared, and then I went and then shared it with me, and then I got selected. Yeah, I mean, he's just being modest. Anyways, so yeah, again, I mean, I just want to say, right? So if you get rejected from one company, don't be disheartened. I mean,
eventually you have to go to one company, not all the companies, right? So you can always apply. There are so many companies, right? So I think my first company, I mean, for interview, my first company was Amazon, and I applied in startups because that's how people play, right? First, we'll give interviews in startups, we'll prepare, and then we'll go in some big companies like Amazon or Google. I had the third round, it was a design round. So he asked me, first of all, about my background, my past projects. So, just for the viewers, I joined Goldman last year only, January 2020. Before that, I was working at SAP. So I worked there for 2 years, 8 months, sort of. And then I switched to Goldman Sachs, right? So he asked me about my past company, my projects. And he also asked me, why do you want to switch? Because my projects were good. And so, yeah, so you can't say you work badly, right? Otherwise, the interviewers is not impressed. And if you justify your work, then he will ask you, why do you want to switch, right? So you should have a good answer for that. Okay. Anyway, so I mentioned all my reasons, whatever reasons I had for switching. Then he asked me the question. So he asked me for a design of a social platform, right? So social platform like maybe Facebook or whatever, right? So what any social platform you can think of. And he first he asked about social platform, and as soon as we started discussing it, he took a sub problem of that or a subset of that design, and we discussed more on that subset basically, right? So yeah, he asked about social platform. I started telling about the user profiles, right? What functionality they can have, and make sure you ask questions. I think Devanshu has made a video about design rounds as well. Make sure you watch it again. It's really good. So I'll again make sure put you the ask link questions. in the description. Yeah, sure. So make sure you ask questions. How many users you want? You know, what would be the traffic? What features do you want? Features are very important because then only you can think of application design basically, right? So he said, so after hearing a bit about it, I think what he heard was a bit of cliche. So it was like, okay, forget it. I mean, let's focus on one subset, right? So again, that's what happens, right? So if you read from something and you try to tell the same thing, whatever you read, interviewer already knows it. Right? So he wants a bit different, right? He wants to know how you think. So he asked me, let's say we want to build a new social platform where um, you can see your mutual friends, basically your friends, right? So first he asked, how will you see your friend? And I said, like, I mean, that's pretty simple, right? I mean, so again he asked, how will you store, right? So what I said was, there will be a user table, and then there will be a ID mapping, right? One ID from ID to ID, whatever, right? And again, make sure you follow the 1NF or 2NF database norms, right? So yeah. So he said, okay, but let's say now I want to find friends of friends, right? And again, so I said, you will have one more column where you will have friend to friend, you will take a join. And then he said, let's say I have a friend to friend to friend, right? So he kept on progressing it to the nth level. And then he asked me, do you see the problem? And yes, you do see the problem, right? Too many joins, right? So I said, yeah, this will not work. Then he said, what will work then? So I said, like, maybe the graph database will work, right? So again, if you want to read more about graph database, you can Google or contact Dimanshu. He can guide you on that. Different kind of databases, NoSQL or SQL. So anyways, so the answer was graph database, and he asked me, how will you implement it? So I wrote a working solution for that. And then he asked me, this is a DB level, right? What will you do on application level? Because every time you start on querying the graph database, it is on ROM, right? So I said, I mean, you will make a graph in your physical memory as well on the application level, and you will cache it basically, right? So he asked questions about the caching, then caching mods basically, right through, right around, whatever, right? So again, you can read about it. So and I told that I knew about it somehow. And then he asked me, what traversal will you use, right? Will you use DFS? Will you use BFS? Again, I mean, it's a graph traversal. You can use
any graph traversal you want, right? I mean, you have to just traverse the graph, right? But for this specific use case, one traversal is better than the other, right? So maybe you can think about it. I mean, I gave the correct answer and we discussed a lot about it. And again, he asked me to write the code for it. So yeah, so I was pretty happy with my third round. I mean, I knew I would get through because it went fine. Um, and I thought this will be the last round, right? So already I had 5 rounds total. And so I asked HR, is it over? And they said, yeah, it is over. And I was pretty happy because the last round matters a lot. But then he said, no, there's one more round. Okay, fine. So I went for another round. There again, there was a senior person. So I thought maybe this will again be a design round. But that senior person first asked me about my projects. He grilled me a lot about my projects. How did you design? So what was his framework? Was it a monolith or microservices? He asked me a lot of questions about it. And step by step, I answered all those questions. So again, whenever you are putting any projects in your resume, make sure you know about it. Yeah. From everything, 0 to 100%. Everything you should know. And sometimes people just copy the projects from other people just to show off, or they think they haven't done enough. Don't do that. Otherwise, interviewer will always ask you one question which you would not know about, because the person who implemented it spent hours and hours of debugging, maybe, or Google search or whatever, right? So they know about it. What were the actual problems, right? So it's better to have nothing at all rather than having some fake project or anything. Right. I mean, if you don't have good company projects, so I hear people saying that we don't have very good work at my office. That's why I want to switch, right? If I would be working on a good project, why would I switch? I mean, don't worry about it. You can mention your pet projects, right? Work on your pet projects. You can build anything, right? I mean, everything is. You can build an Android app and upload in Play Store. Yeah. Then you can share that link. Yeah. Yeah. I mean, yeah, you can make a web app. You can make a mobile web app, right? So that's like you can use native hybrid frameworks, Ionic or whatever, and then maybe host it on AWS. It is free for 1 year, right? So many things you can do, and don't worry about it. But please make sure whatever you mention, you know about it, right? So yeah, so he grilled me about 20-25 minutes, and then there was one junior person with him, right? So he asked me a lot of questions. He said, are you a Java developer? And I was a Java developer. Unfortunately, I was using Java 7, and he asked about Java 8. So there's a massive difference between Java 7 and Java 8. I think Java developers would know, right? So there is streams, right? In Java 8, there are no streams in Java 7. So I straightforward mentioned that I have not worked on Java 8, but this is how you will implement in Java 7. Simple, right? So just implement an anonymous function, and then he got a bit disappointed, because the technology these guys use is Java 11 basically. So yeah, because they have to select you for the right profile, right? So if you're not comfortable with Java 8, then interviewers also not satisfied with. कंपनीज थोड़ा ऐसे भी सोचती है ना कि अगर उस बंदे ने इसमें काम किया है जावा 11 में, तो उसका ऑनबोर्डिंग टाइम काफी कम होगा, वो आते ही उस पे काम करना स्टार्ट कर देगा। राइट। हाँ, अगेन मुझे प्रॉब्लम हुआ, मतलब जावा 7 से जावा 8 जाने में। आई मीन प्रॉब्लम इन द सेंस कि यू हैव टू रीड, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जावा 8 रेवोल्यूशनरी है, ऐसा है कि बट काफी चीजें इजी हो गई हैं, राइट? तो अब तुम्हें पता ही नहीं अगर स्ट्रीम क्या है, मैप क्या है, फ्लैट मैप क्या है, तो तुम नहीं लिख पाओगे, तो पढ़ना ही पड़ेगा, राइट? तो एनीवेज, मतलब ही वाज बिट dissatisfied, but I think interviewers also know that it is not the person's problem, right? What technology they worked on. So then he started me asking core questions. He asked about garbage collector, a bit about young generation and all. You can read about it, right? Then he asked me about multi-threading. Then he asked me very core questions, right? Very core questions, such as, let's say you print something, right? Sysout, with sysout, where do you import this sys? I mean system.out, right? You don't import anything, right? You can print it basically, right? How? I mean, how this works internally. So I knew a bit about it, so I answered that. Then he asked about
prepared statement a lot. Prepared statement, I mean, I think Java developer would know whenever we query DB, you use a library. So he asked about SQL injection. If you, I mean, if you haven't heard of it, just Google it. I mean, no need to worry about it. Yeah, he asked about errors, exceptions, right? What is the difference between error and exception, right? So I mean, you can read all about basically it, but yeah. Java के core concepts में काफी कुछ core concepts, right? He didn't ask about design patterns because design pattern में क्या होता है, जनरली लोग पढ़ लेते हैं, right, और definition बता देते हैं या थोड़ा बहुत implement कर देते हैं और लोगों को लगता है कि singleton ही पूछेंगे या factory पूछेंगे ज़्यादा से ज़्यादा. That's why sometimes interviewers trick करने के लिए core questions पूछते हैं, बिल्कुल ठीक है. तो make sure whatever you are coding, you know, I mean, right? तो अगर किसी ने जावा में काम ही नहीं किया कभी, मतलब right. उसने Node.js में अब तक उसका जो भी वर्क एक्सपीरियंस है उसमें right. तो फिर ये राउंड नहीं होगा या इस राउंड में कुछ और पूछेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है. तो होता क्या है कि वो इंटरव्यूअर्स उस हिसाब से भेजेंगे, राइट? मतलब अगर तुम जावा डेवलपर हो तो वो सॉर्ट ऑफ ऐसे लोग भेजेंगे जिनको जावा नॉलेज है, राइट? तो अगर Node.js के हो तुम, मतलब ऐसा ना हो कि अब व्यूअर्स अब जावा करने लग जाएंगे सुन के, ऐसा कुछ भी नहीं है. मतलब आई थिंक इट इज अ नाइस क्वेश्चन. तो व्हाटएवर टेक यू आर वर्किंग ऑन, कीप वर्किंग ऑन दैट, जस्ट नो द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ दैट टेक, ठीक है? फिर उसने मुझे SQL क्वेरी दे दी, तो उसको लगा कि अब ठीक है, जावा डेवलपर है, तो मैंने बताया था कि मैं SQL पे काम करता हूँ, तो अब मुझे SQL का उतना सिंटेक्स याद नहीं था, राइट? और उसने मुश्किल क्वेश्चन पूछा था, मतलब वो पार्टीशन ओवर रैंक वाला क्वेश्चन था बेसिकली. एंड आई मेंशन कि I mean, it's been a long time since I've worked on SQL, but he said you have mentioned it on your resume, that's why I'm asking, otherwise I wouldn't ask, right? So again, this is a lesson, right? So just revise, right? So if you want to put SQL, revise it, right? So I knew, but I didn't remember the syntax, so I wrote a pseudo query which would work in maybe Postgres or Oracle DB. So he was happy. He said, yeah, you know the concept, so that is okay. And yeah, that's it. After that, HR called me. HR asked me about the salary expectations or when can you join, explained me a bit of structure of Goldman Sachs. Yeah, then I joined. And हाँ, जिन लोगों के 1 साल कम एक्सपीरियंस है मुझसे, तो उनको एनालिस्ट 1 मिला, राइट? तो आई मीन डोंट वरी अबाउट रोल एज सच, मतलब I mean, it is okay to go for analyst because you might end up getting analyst too, right? So ask your HR in the end round. So अभी इंटरव्यू के बारे में हो गया. So let's talk about कि काफी लोगों का ये डाउट रहते हैं कि as you were from chemical engineering, not computer science, right, or even electrical or electronics. So right, being from chemical engineering or mechanical engineering or civil, how can we get jobs in software? So right, when did you start preparing for DSA? एंड आपके क्या प्रोजेक्ट्स क्या थे जो रिज्यूमे में लिखे? क्योंकि केमिकल वालों, सीएस वालों के तो कुछ प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं जो एकेडमिक प्रोजेक्ट्स होते हैं. सो वो कैसे मैनेज किया वो सब? राइट, तो again, I mean, if you are from another stream and you want to switch to any other stream, right, apart from your core stream, it is a bit difficult. I mean, that is the reality, right? So I'm not gonna say it is easy. It is difficult, right? So I mean, if you have to switch, you just have to face the difficulties, right? But I think, I mean, it also depends upon the college कि college कितना flexibility देता है तुम्हें दूसरी stream के courses करने में, right? And I think my college was very supportive. I mean, yeah. So we had open electives culture. I think every college has it nowadays. It's not about my college. I just know about my college, so I'm just telling. So in my college there was a culture of open electives, so people could take electives of any stream. People would generally take humanities or maybe some art, music, whatever they want to, right? So hobby basically. So I wanted to go to computer science basically, and so I took their electives. So, and again, if your college does not offer you this flexibility, don't worry about it. I mean, you can get Coursera. I mean, log on to Coursera, do the courses. You should just do the courses.
to mention on your resume, right? Hmm. So make sure if you are from a non-CS background, mention your core courses on the resume, right? Yeah. I mean, again, CS people don't need to mention because everyone knows he has done the CS, but you have to mention it. So have a subsection of courses. So there you can mention it. Hmm. Make sure you do the core courses. For example, OOP, DSA, um, then maybe O- discrete mathematics. or Yeah, OS and DBS. OS, yes, OS, operating systems, right? So these four basically. These four are major, but if you do more, I mean, it is Hmm. up to. I mean, it is up to if you want to do more. I recommend doing more because you want to go in that stream only, right? I mean, Yeah. doing four courses does not make you a computer science engineer, Hmm. right? That is the reality. That is the bottom line. Simple, right? Hmm. Doing these courses just help you to get started with computer science. That's it, right? Hmm. So if you want to do more, do more. Take DBMS, take machine learning, take information retrieval if you want to. Hmm. Take computer networks. Try to take core courses basically. जितने Maybe you जितने can take कोर्सेज machine learning. जितने कोर्सेज ज़्यादा होंगे एंड कोर्सेरा से तो सर्टिफिकेट भी मिल जाते हैं, सो Right, इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ ये बंदा सीरियस है कंप्यूटर साइंस के right, बारे में, जस्ट ऐसे right, जॉब लेने के right, लिए नहीं आ गया, ही इज एक्चुअली right. इंटरेस्टेड इन दैट. राइट तो हाँ बेसिकली मतलब रिज्यूमे में क्या है, तुम्हारा एफर्ट है, राइट? तो अगर इफ यू आर फ्रॉम अ नॉन सीएस बैकग्राउंड एंड यू हैव 8 कोर्सेज, तो बंदा बोलेगा अरे इसने 8 कोर्सेज कर रखे हैं कंप्यूटर साइंस के, इंटरेस्टेड है इसलिए 8 कर रहा है, राइट? मतलब और कोई क्यों ही करेगा, राइट? एफर्ट मारा है तो मेक उसने. श्योर, हाँ तो मेक श्योर यू डू द कोर्सेज. कमिंग टू प्रोजेक्ट्स, तो अगेन कोर कोर्सेज में उतना कोई प्रोजेक्ट्स नहीं रहता है, मतलब ऊप में कोई प्रोजेक्ट नहीं रहता है, राइट? या डीएसए में कोई नहीं रहते मेजर प्रोजेक्ट विच यू कैन फ्लॉन्ट ऑन योर रिज्यूमे. अगेन पेट प्रोजेक्ट्स, डू योर पेट प्रोजेक्ट्स. If you राइट. are really interested, start building things basically. Collaborate with your peers. I know I collaborated a lot with Divanshu and Deepak, right? So all these bingies I had and they helped me a lot, right? So collaborate basically. In my end semester, since I was free and I had some credit hours, I did machine learning and information retrieval. So they have a course project basically, Yeah. so I can put that on my resume now, right? So I started doing that. It's just a bit impressive, right? So you have your academic project, you can have your pet projects as well, right? And I had my internship projects. So luckily, based on my courses and my CGPA, I got into InMobi. I mean, if you have not heard about it, it's a startup. I'm no longer a startup, but it's a good company. You can search about it. It's a very good company to get Very good started. company. Yeah. Yeah, you get a lot of exposure. Basically, I would say 6 months internship taught me a lot. I developed web dashboard, automated tools, mobile application and whatnot, right? So I worked on a lot. So I had around 4 to 5 projects, and I just put that on my resume. And when I interviewed for my first company, which is SAP, I got selected based on my academic project, pet projects, and internship projects, right? And obviously your DSA knowledge, basically. Hmm. So yeah, that's it. And again, it is a bit hard to get started, right? So if you want to apply for a company from a non-CS background just after college, it is a bit difficult, right? So you have to depend upon on-campus placements. Off-campus placements will be a bit harder. But once you get started in any company, be a startup. I mean, it doesn't have to be a very big company. It could be a Yeah. startup, right? I Then know people. officially you are a software engineer if you get into any Right, company. right. Yeah. I know people working in Just Style and all just to get the title. So after that, no company would ask you what background are you from, because your background is now your previous company's work basically, Hmm. right? Right. So don't worry about it, right? And yeah, I mean, yeah, if you want to know in depth what else did I do, I mean, you can contact Divanshu, maybe get my contact. But yeah, I mean, these core courses only I did Yeah, mostly. and I know And how you started preparing for data structures, like what right, sites you practiced on. बट बाकी व्यूअर्स के लिए काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चंस हैं कि किस ईयर में आके, किस सेमेस्टर में आके right, डीएसए करना या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना right, वो स्टार्ट किया. सो इफ यू कैन टेल right. अबाउट दैट. Yeah. So
फर्स्ट ईयर में सी प्रोग्रामिंग का कोर्स रहता है, राइट? सबको रहता है, मैंडेटरी कोर्स होता है। तो मैंने वो किया, तो आई मीन उससे पहले भी मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट था ऐसे वेब डेवलपमेंट में। तो मतलब मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि ठीक है, थोड़ी और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आई डिडंट नो अबाउट एनी कोडिंग वेबसाइट, बट लकीली आई हैड माय कॉलेज मेट्स। तो आई वुड आस्क देम कि अरे यार तुम लोग कहाँ पे करते हो? तो तब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही ऐसे वेव चलता है, राइट? कॉलेज में सेकंड थर्ड ईयर में कि अरे यार कॉम्पिटिटिव करेंगे, आईसीपीसी जाएंगे, गूगल जाएंगे, गूगल राइट? सबको जाएंगे। रहता है। तो राइट, तो सबका वही रहता है। तो जी सॉक लगवाएंगे, राइट? बहुत कुछ रहता है, राइट, कॉलेज में। तो मुझे भी लगा कि ठीक है, आई वुड स्टार्ट स्लो। तो आई स्टार्टेड ऑन स्पॉज, SPOJ, Yeah. right? So you can search, but yeah, so it is a good website to just get started. Hmm. So I, first of all, on my first day, I made accounts on every website. Spotch पे भी बना लिया, Codechef पे भी बना लिया, HackerRank पे भी बना लिया, ठीक है? एंथू बट बहुत होता है ना अगेन, स्टार्टिंग में। राइट, बट उसका उतना कोई फायदा नहीं होता। तो मैं स्पॉज ही कर रहा था, और वहाँ पे मैं मोस्टली एडहॉक क्वेश्चंस करता था, क्योंकि सेकंड ईयर है, 2-1 है, मतलब सेकंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर। और ना मुझे ट्रीज पता है, ना ग्राफ पता है, ना डीपी पता है, तो मैं ये क्वेश्चन छेड़ता ही नहीं था। मुझे लगा अरे ये तो नहीं होंगे, मतलब। तो मैं एडहॉक करता था। एडहॉक करने से फायदा ये हुआ कि थॉट प्रोसेस थोड़ा डेवलप हुआ उससे, कि कैसे थोड़ा सोचना चाहिए। और आई थिंक थोड़ा सा मेरे से भी गलती रहा, आई थिंक मैं थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर सकता था, बट मतलब ठीक है। तो थर्ड ईयर में मैंने कुछ इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया, कोडिंग वाले के लिए। और उसमें ग्राफ का क्वेश्चन आया, ट्रीज का क्वेश्चन आया, तो नहीं बन पाया। तो कि यार ये कैसे करते हैं? तो मैं आया, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर कि आई आस्क्ड दिवांशु एंड वन ऑफ माय अदर विंगीज, दीपक, कि कैसे करना है यार ये? तो उन्होंने बताया कि अरे ये ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसे ऐसे करना है। तो देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट ट्रीज, टीपी, ग्राफ ऑन गीक फॉर गीक्स, राइट? बट आई विश आई न्यू इट सूनर। तो अगर कोई सेकेंड ईयर में है, राइट, अगर कोई फर्स्ट ईयर में है तो चिल करो, इतना भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, राइट? मतलब कॉलेज लाइफ एंजॉय करो। अगर सेकेंड ईयर के एंड में हो, 2-2 में हो, एंड इफ यू आर रियली कीन ऑन गोइंग इनटू कंप्यूटर साइंस, मतलब नॉन सीएस हो चाहे सीएस हो, थोड़ा बहुत ग्राफ और डीपी और ट्रीज पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि डीपी के लिए स्पेसिफिकली थॉट प्रोसेस डेवलप होना इम्पोर्टेंट है। तो मतलब जितनी जल्दी कर लोगे उतना बेटर है, राइट? Yeah, like I've made a video on how to get started with DSA, या कि कैसे या step by सो यू step कैन, कैसे करें, so you can watch या that. you can watch that, yeah. And so yeah, I practiced on Spoj। और हैकर रैंक पे भी थोड़े बहुत कॉन्टेस्ट होते थे, तो ऐसे कॉन्टेस्ट होते रहते हैं, राइट? हैकर रैंक में कि AWS का तुम्हें $50 का कूपन मिलेगा, ऐसे कुछ कुछ चलता रहता है, राइट? तो पार्टिसिपेट इन दैट। मतलब अगर $10 का भी मिल जाएगा तो भी इशू नहीं है, राइट? मतलब यू कैन होस्ट योर वेबसाइट। तो आई यूज्ड टू डू दैट, ठीक है, थर्ड ईयर में। बट इट वाज अ बिट लेट अगेन, आई वुड से। तो हाँ, ये सब किया। उसके बाद फोर्थ ईयर में there was a new website at that time, it was new for us, interviewbit.com. So I think Divanshu would have covered about interviewbit website on in his previous video. Yeah, so make sure you watch that. I think he'll put it in the description. Yeah. Yeah, Divanshu. Yeah, Yes, okay, yes. cool. Yeah, so fourth year I started with interviewbit. Why to do interviewbit? Because it's like a crash course, right? So you have buckets, arrays, strings, DP, graph, trees, whatever, and you try to do questions from every bucket, right? तो क्योंकि वाई, बिकॉज स्पॉज और हैकर रैंक पे थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है, इतने सारे क्वेश्चन है यार, कितने ही कर लोगे? गीक फॉर गीक्स पे इतने क्वेश्चन है, लोग रट्टा लगाने लग जाते हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं है, राइट? तो इंटरव्यू बिट पे करो, वहाँ पे टाइमर भी रहता है, वहाँ पे हिंट्स भी रहते हैं, राइट? अगेन, मैं प्रमोट नहीं कर रहा इंटरव्यू बिट को, जो कोडिंग वेबसाइट कर रहे हो कर लो, ऐसा कुछ इशू नहीं, बट इंटरव्यू बिट पे थोड़ा स्ट्रक्चर्ड है, तो बेटर है अगर 3-4 मंथ्स हैं प्रिपेयर करने के लिए। तो हाँ, मतलब मैं इंटरव्यू, तो जीएस के पहले या Amazon के पहले, actually I interviewed some other companies like Paper, Microsoft also. For all these companies I prepared from interview bit because I had less time. तो 2 months में I think हो गया था इंटरव्यू बिट पे प्रिपेयर करना, Yeah, राइट? I also before preparing for Amazon, I prepared through interview bit. Yeah, and I think
आजकल लीड कोड काफी फेमस है, मतलब हमारे लोगों को टाइम लगता पे है कि इतना नहीं था, जब हम कॉलेज में थे तब लीड कोड आई थिंक सुना, सुना भी नहीं शायद था। सुना था, पता नहीं, लेकिन कभी मैंने नहीं, ध्यान नहीं हाँ दिया था। मैंने नहीं सुना था, मे बी आई थिंक फॉरेन में थोड़ा ज्यादा चलता है, लीड कोड का कल्चर ज्यादा है। हाँ, आई मीन इट इज ओके, इट इज क्वेश्चंस राइट, एवरी वेबसाइट हैज इट। अगेन लीड कोड पे बहुत क्वेश्चंस होते हैं, ओवरवेलमिंग हो सकता है। शिफ्ट टू इंटरव्यू बिट, इफ यू थिंक यू कैन डू ऑन लीड कोड, कीप ऑन डूइंग इट, नो yeah. प्रॉब्लम। So our last question is, so college से pass out होने के बाद, when like you started applying for after your first job, when you started applying for Goldman Sachs or Amazon or any other company, so have you ever felt any disadvantage कि किसी company ने reject कर दिया because you were from chemical engineering, और इन ड्यूरिंग योर जॉब हैव यू एवर फेल्ट कि केमिकल इंजीनियरिंग होने का कुछ डिसएडवांटेज है कि अगर मैं सीएस का होता तो आई वुड हैव डन दिस अ लिटिल बेटर, या ऐसा कभी कुछ फील हुआ? आई मीन अगेन शॉर्टलिस्टिंग में कुछ नहीं रहता है, because as I said, if you have some experience, right, so this becomes your background. So if you have a good experience, good projects, so it doesn't matter in shortlisting. Okay. But if you talk about Google, Facebook, I mean, they can always reject you irrespective of your background. Yeah. They reject resume of CS, they reject resume of non-CS. So I mean, yeah, I don't think branch matters a lot. Maybe as a fresher it would, right, a bit, but after some experience it won't. Okay. And sorry, second question क्या था, इसके साथ ही क्वेश्चन क्या था? लाइक इन योर जॉब हैव यू एवर फेल्ट कि हाँ, जॉब में, राइट। तो आई थिंक इफ यू डू कोर कोर्सेज यू वॉन्ट फील इट। तो बट अगर ऐसा होता भी है तो तुम पढ़ सकते हो, आई मीन इतना कुछ इशू नहीं है। बट एज सच मुझे इतना इशू नहीं हुआ है, ठीक है। और मुझे कभी लगता है तो मैं खुद से पढ़ भी लेता हूँ कि क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आई सेड लाइक आई हैव नॉट डन कंप्यूटर नेटवर्क्स, राइट। if I make a project, I mean if I get enrolled in a computer networks project core, so I would face a bit difficulty, to be honest, right? But एज सच हुआ नहीं अभी तक तो, मतलब क्योंकि मतलब मेरी टीम का वो काम नहीं है। तो मैं बैकएंड डेवलपर हूँ बेसिकली, और बैकएंड डेवलपर में ज़्यादातर काम 90% डिज़ाइन लोग पैटर्न्स, 90% लोग बैकएंड में ही जाते हैं, लाइक राइट। तो नेटवर्क्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, सो जितना भी राइट तो हमने पढ़ा होता है कोर कोर्सेज में, दैट कवर्स एवरीथिंग आई थिंक। हाँ, राइट। तो मोस्टली वही डिज़ाइन पैटर्न वगैरह है, और वो कोर कोर्सेज में होता ही है, तो उतना एज सच मुझे नीड नहीं पड़ा है। बट अगेन, अगर कोई बंदा कंप्यूटर नेटवर्क्स में ही जाना चाह रहा है, मेक श्योर यू डू द कोर कोर्स, बस दैट्स इट। So thanks Abhishek again for being a part of this. If you have any questions from Abhishek, if you want to ask him anything, you can connect with him on LinkedIn. I'll post the link of his profile in the description below, so you can connect with him and ask any question. Yeah, thank you, Diyanshu, for calling me over. I think we had a good session, and I would say one thing, not because we are friends from 8 or 9 years. I think what you have started doing is a very nice platform. It is a nice platform for freshers as well. I mean, but it is also a good platform for the people who apply after their first job or second jobs, right? Basically, lateral hires, because they really don't know from where to read the system design, right? So they face a lot of problems. I know we face it, right? I Yeah. mean, so I think, yeah, I think your channel would guide them a lot. Yeah. Thank you. Thanks a lot. Yeah. That was it for the video. Hope you enjoyed the conversation. If you liked it, please hit the like button below, and for more such videos, hit the subscribe button. If you have any doubts or any queries, you can post it in the comment section below. You can also join my Telegram group for any queries. You can also DM me on Instagram. All links are in the description below. So until next time, goodbye and keep practicing.